Namaskar dosto, welcome back to our channel, The Future School. In today's session, we will talk about and cover topics on mathematics. And the first chapter we will begin with is number systems. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। हमारे सेशन में इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम पहली चीज जो आपको बताना चाहते हैं वो है एक वीडियो पे हम एक टॉपिक को कवर करेंगे सो दैट हम कम समय में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर और कंसाइज तरीके से प्रेजेंट कर सकें। आइडिया है दैट वी ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और नंबर सिस्टम्स के इस फर्स्ट चैप्टर में हम ये सभी कुछ कवर करेंगे। वी विल ऑल्सो हेल्प यू विद हाउ कैन यू यूज द शॉर्ट ट्रिक्स दैट वी विल शेयर। इन शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन और कोर्स में, और एप्लीकेशन क्या है इन फॉर्मूलेस के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। ये चैप्टर डिवाइडेड है न्यूमरल्स, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर, टाइप्स ऑफ द नंबर्स, ऑपरेशन ऑन दीज नंबर्स, divisibility test, and the unit place of an expression, and basic number theory. ये सब sections हैं number system के. So let's begin with the first introduction of numerals. We all understand that the number system is a system in which we study different types of numbers. For example, 0 से लेकर के 9 तक जो numbers होते हैं, we call them digits. While 0 is also called an insignificant digit, others are called significant digits. We also have learned the concept of face value and place value of a digit in a numeral. So example लेते हैं, ये 35,48,574 is a number, is a numeral in which face value number 3 की face value जिसे वैल्यू ऑफ डिजिट भी कहते हैं वो 3 ही रहेगी, विच मीन्स फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वो स्वयं होता है, बल्कि उसकी प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है उसके पोजीशन पे, उस न्यूमेरल पे। फॉर एग्जांपल 3 नंबर 3 या डिजिट 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 लाख पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट्स लुक एट टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो हमने ये काफी डिटेल में पढ़ा होगा, बट इस प्रेजेंटेशन में वी विल कीप दिस एक्सट्रीमली शॉर्ट। सो नेचुरल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं एज काउंटिंग नंबर्स। लेट अस कॉल दैट n, which begins from 1 to beyond. So all the natural numbers are positive. इस बात को नोट करें, और ऑल्सो इस बात को नोट करें कि कई बार क्वेश्चन में या क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, तो कई बार वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इस बात का नोट करें जब भी आपको वो अटेम्प्ट्स या वो आपको तरीके के क्वेश्चंस मिले। होल नंबर्स जो होते हैं वो n+0 विच मींस नेचुरल नंबर और 0 मिला करके होल नंबर्स बनता है। इस बात को नोट करें कि 0 is the smallest whole number. Let's look at the third type of numbers, which is integers, which is the whole number and also the negative numbers. So there are positive integers and negative integers that are there. और इस बात को नोट करें कि 0 is neither positive nor negative integer. Let's look at even numbers, which is quite easy. आप सभी को पता होगा कि number divisible by 2 are even numbers, जिसकी यूनिट प्लेस जनरली 0, 2, 4, 6 और 8 होगी। Odd numbers are those which are not divisible by 2 and उनकी यूनिट प्लेस होगी 1, 3, 5, 7 और 9। Let's move to the next set of numbers, prime numbers, जो कि numbers जो स्वयं से divisible होते हैं और 1 से divisible होते हैं। So only those numbers which are divisible by 1 and itself are the prime numbers. 2 is the only even prime number. कई बार ये क्वेश्चन में घुमा करके पूछा जाता है, दूसरे शब्दों में पूछा जाता है। It is good to know, good for you to make a note that 2 is not 2 is the only prime number that's there, and 1 is not prime, thus the lowest prime number is 3. फिर बात आती है कंपोजिट नंबर्स की।
Composite numbers are non-prime numbers जिनके factors 1 वो खुद number और at least एक और, which means 1 is neither prime nor composite. Let's look at what are co-prime numbers. So those numbers which have HCF या highest common factor 1 हो, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 7 and 9, इसमें जो डिविजिबिलिटी होती है वो सिर्फ 9 नंबर 1 से ही हो सकती है, एंड द अदर एग्जाम्पल इज 15 16. ऐसे ही सेवरल एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं. ऑल दीज नंबर्स जिनका HCF 1 हो वो co-prime कहलाए जाते हैं. Let's look at rational numbers. Rational numbers we also understand can be denoted as P by Q or A by B in various equations, and those are rational numbers. Then comes the irrational numbers, or those numbers that cannot be expressed as A by B or P and Q. For example, pi or a square root of 2. Now these are those numbers which are called irrational numbers. And then of course are the real numbers, which means all the rational numbers and irrational numbers together become real numbers. Wonderful. Let's move to the next. Let's look at the third topic, which is the operation on numbers, और ये आपको बॉड मास प्रिंसिपल तक लेके जाएगा, जो कि हम अगले वीडियो पे कवर करेंगे. So let's look at what are the operations जो हम एक नंबर पे कुछ नंबर उस पे कर सकते हैं, which is of course addition, subtraction, division and multiplication. और डिवीजन के अंदर हमने ये नोट देखा होगा कि a by b या कोई इक्वेशन होती है तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, विच इज कोशेंट, डिविडेंड एंड द डिवाइजर. एग्जाम्पल दिया हुआ है रूप में 17/5, 17/5 में 3 into 2/5 is what it becomes. So there is quotient, dividend and of course the divisor, as you can see. Thank you guys for your time. नेक्स्ट सेशन में हम बचे हुए नंबर सिस्टम के पोर्शंस को कवर करेंगे. Stay tuned, subscribe to us. If you like the video, please do click on us and follow us. We look forward to keep sharing these insights and free information to all of you. Join us back in the next video and in the continued series of the number system. Thank you. You have a wonderful